Hello and welcome to another exciting episode of Through the Abled Eye, a podcast to educate and empower families of children with special needs. And today's podcast is on ABA therapy, which is Applied Behavior Analysis Therapy. In this podcast, we will try to understand what is ABA therapy, why in certain children ABA therapy is recommended, how is it different from other therapies, and what is the role of a parent in ABA therapy. To do this, we have India's first US board certified behavior analyst, Mrs. Radhika Puvaya. She's masters in speech and language pathology and she runs Samvad Institute of Speech and Hearing and Samvad Centers of Speech and ABA Therapy in Bangalore. She's been awarded as emerging icon in healthcare by Times Group, and she also got her community service award by Rotary Club of Bangalore. Radhika ma'am, a very warm-hearted welcome to you. Thank you, Rituji. Thank you for inviting me. We are so honored to have you here. आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है एबीए थेरेपी जो रिसेंटली कुछ टाइम पहले पॉपुलर हो गया है बट इसकी इंफॉर्मेशन किस बच्चे को ये जरूरत है ये अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है तो हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे व्हाट इज एबीए थेरेपी ठीक है. ABA therapy is a therapy that teaches you how to teach a child and what to teach. ओके That is in simple terms. कैसे इस बच्चे को सिखाएं करेक्ट कि ये सीखते जाए राइट और क्या सिखाएं. जब भी ये कंफ्यूजन होता है तब ABA के सहारे से हमको स्ट्रेटजीज मिलता है, आंसर्स मिल जाएगा. ठीक है. करेक्ट सो ABA इज अ न्यू साइंस. ओके ठीक है. हमारा स्पीच थेरेपी इज 100 years old शायद. ABT therapy is also another 100 years, but ABA is not been accepted till about 50 years ago. And अभी इंडिया में 20 years से थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आया, 5 साल से थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस. Correct. So, Radhika ma'am, as I said, you are masters in speech and language pathology. So, basically, you know everything about speech. Why did you choose to do a certification in ABA therapy? In what circumstances you felt that this is also required, though you know so much about speech? Yeah, so I had worked with different populations, hearing impaired children, stroke patients, stammering, ये सब. But autism, when we were students, we never saw children with autism. Right. And in 2002, I started my private practice. And then there was maximum number of children with autism. And I started working with them and I said, I am not able to bring the changes that I want to bring because children with autism have so many other barriers. They are not motivated to sit with us. Like if you get any child, you can teach anybody who's interested to learn, right? Yes. You take out a book, you take out a pencil, you take out a color pencil. If the child is interested, you can teach anybody. बट यदि बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं है, भागता रहता है, तो तुम क्या सिखाओगी. करेक्ट. तुम जितना भी ओटी करवा लो, ओटी के बाद बैठाओ स्पीच थेरेपी के लिए, कोई बैठता ही नहीं है बच्चा. थोड़ी देर बैठेगा फिर भाग जाएगा, फिर स्टिमिंग करेगा, भागेगा, जंप करेगा, अपने आप कुछ भी बोलता है. सो ऑटिज्म चिल्ड्रन आर अ डिफरेंट डिसऑर्डर. इट इज नॉट अ सिंपल स्पीच डिले. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एबल टू टॉक बट नॉट इवन इंटरेस्टेड टू टॉक. करेक्ट. दे आर नॉट ईगरली वांटिंग टू लर्न. उनकी वो अपनी दुनिया में खुश हैं. तो फिर मैंने सोचा मेरे स्पीच थेरेपी से इन बच्चों का क्या हो सकता है. बहुत लिमिटेड एक दो बच्चे का थोड़ा बहुत मैंने नाउन सिखाया, वर्ब सिखाया, वोकैबुलरी थोड़ा सिखाया, एंड आई रियलाइज इट इज नॉट इनफ. तो फिर जब सब लोग बोलते हैं इतना ही सीख सकते हैं बच्चे, इससे ज्यादा नहीं सीख सकते, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद इतना ही सीखते हैं, क्योंकि 2002 में किसी को आइडिया ही नहीं था. करेक्ट.
जो भी बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने पूछा, सब लोग बोलते हैं इतना ही. बट लकीली फॉर मी, वन ऑफ माय क्लाइंट्स ओनली, हर बच्चा वाज वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड, बहुत टेम्पर टैंट्रम्स था, और मिनिमल कम्युनिकेट कर रहा था. तो उन्होंने तो रिसर्च करते रहते थे ना कि क्या बेस्ट बेस्ट मेथड्स है वेस्टर्न वर्ल्ड में. तो करेक्ट. उनको पता लगा कि एबीए अभी यूएस में पॉपुलर है. हम्म. तो उन्होंने एबीए थेरेपिस्ट को इंडिया बुलाया. ओके. अच्छा, और मैं इनको बताया कि वी आर कॉलिंग दिस इज अ न्यू अप्रोच राधिका. मैंने बोला बढ़िया, इफ वी हम्म. कैन लर्न समथिंग बेटर फॉर आवर चिल्ड्रन, यस. दैट वी हेल्प देम, बिकॉज ऑटिज्म चिल्ड्रन को कम्युनिकेशन भी नहीं आता, बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हाइपर एक्टिव भी होते हैं, सेंसरी इश्यूज भी होते हैं. कैसे इन सबको सॉल्व करें? तो एज अ स्पीच थेरेपिस्ट आई वाज नॉट एबल टू गिव रिजल्ट्स. And therefore, I was happy when I got to know about ABA. And फिर मैंने पहला कॉन्फ्रेंस जब से देखा, पहला कॉन्फ्रेंस में पहले 1 घंटे में मेरे को समझ गया द कॉन्सेप्ट डिफरेंट. मेरे को इसी को पढ़ना है अभी. ओके. आई हैव टू learn this method because this will bring the change. राइट. तो And that's why I studied. Because all the questions I had about autism and हम्म. how to change these habits or these behaviors of these children, how to make them communicate, is it even possible? That professor from US had brought his videos and इनको दिखाया हमको. मेरे को समझ में आ गया कि यही है. करेक्ट. This is the right way to teach. हम्म. And इसीलिए मैंने उसमें मास्टर्स किया. Very nice. So, as you said, your motivation came by dealing with children with autism. Yes. But do you think this ABA therapy is recommended only for children with autism, or it can be for children who are just having some behavioral issues and have no other neurological disorders? See, ABA is about behavior changing. All right. Hmm. So, whichever behavior you want to change, if you do traditional therapy and your child is responding, see, हमारा मकसद क्या है थेरेपिस्ट का? कि सिखाना है. Hmm. टारगेट मूव हो रहा है तो फिर यू आर यूजिंग द राइट, दैट इज द ओनली पैरामीटर ना. बच्चा Correct. प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं? जब बच्चा ठीक से प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ बैरियर नहीं आ रहा है, हर महीना कुछ सीख रहा है, तो फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, हमारा जो नॉलेज था उससे करें. तो इन ऑटिज्म एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम. बैठना नहीं है, समझना नहीं है, काम नहीं कर. बट हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को अपने आप इंटरेस्ट है सीखने में. Hmm. बट Yes. यू कैन, बट देर आर चिल्ड्रन हु आर स्टबन, and then I use ABA principles to break that stubbornness. Right. Or if there is a comorbid condition with hearing impaired children who have less attention span, they have very stubborn children, Hmm. then ABA strategies are used to break that behavior. So ABA is about changing any behavior, either increasing good behavior. Hmm. Good means talking, listening, responding, and decreasing lack of attention, temper tantrums, stubbornness, all this को कैसे डिक्रीज करना और अच्छे बिहेवियर को कैसे इंक्रीज करना. ये Right. है बिहेवियर साइंस. सो विच एवर चाइल्ड नीड्स responds in the traditional teaching, you don't need any specialized method. Hmm. If you see a block, Hmm. अच्छा बच्चा सीख नहीं रहा है, Hmm. then ABA is very effective in finding out why he is not learning Hmm. and then finding a solution to that and making learning happen. So, in precisely as I told you, ABA is about how to teach, what to teach. So, it is about how to make learning happen. Right. Okay. So that we understand now what is ABA. We, I also understand that in what situation ABA is recommended. Now, if a child comes for assessment, what are the parameters you see? Like if I'm an ABT therapist, I will see assessments in the listening skills, the receptive language skills, expressive language, speech, cognition, all these parameters I will see in my assessment. In ABA therapy, to begin, you begin with some kind of assessment. So what parameters do you see while doing the assessment? So, I will talk about autism only because Okay. that is the biggest challenge and where ABA is most useful. Okay. Where traditional approaches will give you very minimal results. But if you Right. do ABA properly, you get very good results. Okay. So,
we will do an assessment of communication level. Okay. The ABA assessment is very different from the speech therapy assessment. Hmm. All right. So language is evaluated with different parameters. Hmm. We will analyze language using different parameters. So in ABA, in speech therapy, we'll say expressive language, receptive language. That's it. Correct. In ABA, we are asking, how is the word used? Is this word, the child knows apple, but is the word being used to request also? Or is it only used only to comment? Because in any other problem child, any other learning problem children, if they learn apple, they can generalize it to every situation. Yeah. See an apple also, they will say, give me apple. They will say apple. बट ऑटिज्म वहीं फंस जाते हैं। यदि उनको एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सीखा, दूसरा कॉन्टेक्स्ट उनसे नहीं होता है। Hmm. तो यदि एक बोलना आ गया तो सुनना नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। So we will analyze different parameters of language, which is analyzed by the ABA method. Then we will analyze what are the barriers that are preventing this child from learning. Is his attention is issue? Is the sensory is an issue? Is lack of motivation is the issue? Hmm. Lack of scanning is the issue? Why is he not learning? To analyze that is the most significant part of AP. Hmm. Why learning is not happening Okay. and what to teach this child. Then how to teach it. Hmm. So it's a beautiful, very systematic method. Right. सो वंस यू डू एन असेसमेंट, आपने बच्चे का असेसमेंट कर लिया और आपको वाई क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ये क्यों नहीं सीख रहा। सो मान लीजिए उसमें अटेंशन डेफिसिट है, आई कांटेक्ट नहीं है, कांट सिट फॉर लॉन्गर टू पे मोर अटेंशन। मान लीजिए ये तीन कॉमन जो यूजुअली केसेस में हम देखते हैं, दीज आर द फर्स्ट मोस्ट थ्री थिंग्स जो मैंने भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है। हाउ डू यू बिगिन? आपका एक एबीए का थेरेपी सेशन में प्लान जब आप बनाते हो तो कितने मिनट्स का होता है? उसमें आप किस तरह से एक्टिविटीज या क्या गोल्स लेते हैं? और क्या पेरेंट आपके साथ बैठता है या पेरेंट बाहर बैठता है और आप बच्चे के साथ काम करते हैं? सो आई जस्ट वांट कि एक ओवरव्यू दीजिए एक एबीए सेशन का। तो एबीए सेशन मेरे सेंटर्स में मैं पेरेंट्स के साथ काम करती ओके। हूँ। ओके, मेरे हर सेशन में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं बस 1 घंटा देती हूँ, बट टिपिकली 3 hour प्रोग्राम इज वेरी इफेक्टिव। ओके। Intensity matters. So this child is not interested to learn, correct? बच्चा सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो पेरेंट्स को वो इंटरेस्ट, थेरेपिस्ट को वो इंटरेस्ट लाना भी है और उसको प्रैक्टिस भी देना है, क्योंकि उसको कोई मोटिवेशन नहीं है सीखने के लिए। करेक्ट। दूसरे कंडीशंस में सब बच्चे को मोटिवेशन है पर सीखने में, उनको मजा आ रहा है कि मैंने सीखा। और यदि हमने बोला तुम अच्छा बच्चा हो, गुड बॉय हो, वो उनको काम करता है, उनको दे वांट टू सेटिस्फाई अस, दे वांट टू गेट एप्रिसिएशन। राइट। ऑटिज्म बच्चे को पड़ी नहीं है कुछ, हम्म। तो फिर तुम हेलो वेरी गुड बॉय अच्छा बच्चा करो नहीं करेंगे, तुम क्या कर लोगे? हाँ। तो करेक्ट। पहला सेशन इज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ, सो मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स द चाइल्ड लाइक्स। ओके। ठीक है, सो वी हैव टू बिगिन विथ व्हाट ही लाइक्स। वी हैव टू गिव दिस चाइल्ड हु इज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न टू अंडरस्टैंड कि हमारे साथ बैठोगे तुमको जो भी चाहिए मिलेगा। बिकॉज ऑटिज्म बच्चों को क्या होता है कि उनको जो भी पसंद है ना, उनको जंपिंग पसंद है, उनको स्नैक्स खाना पसंद है, उनको स्पिनिंग करना, टॉयज करेक्ट। को लेके स्पिन करना। क्या हो रहा है, जब तक हमारे पास आ रहे हैं पेरेंट्स का क्या होता है, सब बंद करवाओ। हम्म। तो पेरेंट्स को सोचते हैं कि ये सब डिप्राइव करने से ठीक हो जाएगा बच्चा। करेक्ट। सो जंपिंग कर रहा है तो बच्चे को मदर ने बोला स्टॉप करिंग, स्टॉप स्टॉप कम एंड सिट, नहीं बैठेगा, फिर भागेगा, स्टॉप स्टॉप। स्पिनिंग कर रहा है तो स्टॉप स्पिनिंग, जंप कर रहा है तो स्टॉप जंपिंग। पूरा दिन ये बच्चा मिनिमम 200 टाइम्स सुनेगा डोंट डू डोंट डू डोंट डू। करेक्ट। ये पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे कि तुम इतना बोलोगे तो बच्चा तुम्हारे पास क्यों कम्युनिकेट करेगा? कोई हम्म। पुलिसमैन से कम्युनिकेट करता है? नहीं। करेक्ट। हम्म। कम्युनिकेट करने के लिए एक रिलेशनशिप होना ना, हम्म। ये रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए किसी ने बताया नहीं पेरेंट्स को। थिएटर या बस कार बोलो बोलने से हम्म। उसको क्या पड़ी है?
Correct. So building that connection is the first step, because autism means I am not interested to talk to you. Correct. I am happy in my own world. मेरे Yes. को तुम्हारी जरूरत ही नहीं है. Hmm. So first is making the child enjoy being with us, Hmm. trust us, Correct. tolerate our presence, Hmm. allow us to teach him, Hmm. touch him, and then only we can teach him something, right? Right. And Correct. sometimes if a child comes to 5, 6 years old, it sometimes takes 2 weeks for him to forget to have that positive experience with the therapist, because all the adults in his life have been like policemen, controlling him, telling him no, 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 tokna, tokna, pura din. Hmm. So it takes us 2 weeks to undo that damage. And then we train the parents also. Stop saying no in the house. Just Hmm. join him. Hmm. तुमको सिखाना जरूरी है, पर कहाँ से शुरू करना है ना. हाँ. See, हम पेरेंट्स कभी कभी मिस हो जाता है कि मैडम आप खेलते रहोगे तो क्या होगा. Correct. तो ये खेलना नहीं है, ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, Hmm. ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है. Correct. हमारा भी टारगेट है बच्चा हमसे आंसर करे, पर Hmm. हम कहाँ शुरू करते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड वेयर टू बिगिन. Hmm. In autism, that is the most important thing, where to begin. Correct. And ABA gives you a very clear picture कि कहाँ से शुरू कर, कहाँ Right. फंसा हुआ है बच्चा, कहाँ से शुरू कर. शुरुआत हो जाएगी, फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा तो डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप. शुरू ही तुम गलत करोगे तो कैन यू फोर्स एनी चाइल्ड टू टॉक, कैन यू फोर्स एनी चाइल्ड टू लर्न? नहीं ना. Hmm. यू कैन, ही विल सिट इनसाइड द रूम. तुम रूम बंद करके पेरेंट को बाहर रखो, पूरा 1 घंटा बच्चा भी वेस्ट करेगा, थेरेपिस्ट भी वेस्ट करेगा. Hmm. किसी को कोई नहीं मालूम कि क्या करना है. Yes. Hmm. So we make every minute productive. Correct. Child is motivated to learn, child is engaged with us, parent is watching us, parent is involved, parent also learns, gets the child the practice, results are mind blowing. Wow. So, Radhika ma'am, in continuation, my question is, some families have concern to have a mixed opinion about ABA. They feel ABA is like too structured and too rigid. What is your opinion and about this, what parents are concerned about? Yes, it is very true. ABA is structured and it can be rigid, but the problem is that is why you require that many hours of training to become a good ABA therapist. All right. The ABA therapist is in her hand how to structure the session. How much structure, how much natural play, everything is very flexible. And that's why you need highly qualified people to do ABA. Right? It's not that everybody can become an ABA therapist. Hmm. Second thing is, if you understand autism, you know that natural environment is not helping this child. They are living in a natural environment. क्यों नहीं सीखे? Hmm. ठीक है? Everybody is talking in the house. Joint family में बच्चा autism है. Why does he go and sit alone and play? So that is why the structure works for them. Correct. Right? They need that structure. They need that systematic practice. They need the therapist to be able to balance the rewards and the teaching, everything very systematically. Then only learning happens. And we say as therapists, we start with the structure and gradually loosen up the structure. Correct. Depending on the children. Some children need it for life. Depending on the degree of autism, they need structure all their life. Some children, they need for 1 year a very rigid structure. And by the time it's 1.5, 2 years, they are able to manage regular conversation. So ABA is the science. Okay, how do you implement it? Is depending on the implementer. It's like saying, if I had a bad experience with antibiotics, I will not say antibiotics is bad, will I? No. Right? So antibiotics is proved that it will kill this bacteria. Same way, ABA has been proved to be effective to teach children with autism XYZ skills. There's enough research, 50 years of research. एक दो study नहीं है, thousands and thousands of research. All right, so the implementer is very important. Correct. So which All right, means the right implementer. selection of
ABA therapist, and having a structured format will bring changes in the behavior. So that is A important. structured format is required, Ritu, for autism in Correct. the beginning. Because Right. natural environment didn't work, right? Yes. So those who say it is too structured, I don't like, I say, दिखा दो मेरे को कुछ सिखाकर natural environment में. कुछ भी सिखा के दिखा दो. By now he should have learned to call his mother. Why he didn't learn? Right. Right? So people who say natural environment is required, I say, show me. Teach him something through the natural environment and compare what I can teach through a structured environment. Let us see, compare and see. Who will teach more? Perfect. Yeah. So structure is required and then generalization is required. So an ABA therapist and the parent together should do everything. It won't happen automatically like it happens in hearing impaired children. Yeah. Yeah. Right? Autism is a different condition. Yes. So they need, at every step, they need practice. And then you can let it go. Right. And that's why when we work in my clinics, parent and child therapists together, we get very good results because the parent is helping in generalizing. Right. Perfect. Thank you. Ma'am, you have more than 20 years of experience. I want to 20 give years you with autism. with 20 years with autism. 38 years overall. Oh my God. You what to say? My But grandmother home. yeah, that's nice. That's an honor, I would say. No, इस field के भी grandmother बन गई हूँ अभी. So true, so true. And we are so honored that you have given us your time. So I will No, put my you in a pleasure. situation, ma'am, जहाँ पर parents सबसे पहले because I also deal with parents, so I know उनके क्या situations होते हैं. एक situation मैं आपको देती हूँ and you give a tip so that ये podcast इस tip से उनके लिए बहुत कामयाब रहे. पेरेंट कंप्लेन करता है जैसे ही बेड टाइम होता है, उनका जो बच्चा है जिसमें माइल्ड ऑटिज्म फीचर्स हैं, हियरिंग लॉस भी है, वो जब देखता है कि मम्मी लाइट्स को डिम कर रही हैं, अब सोने का टाइम आ रहा है, वो बहुत ज्यादा जंपिंग शुरू कर देगा, वो बहुत ज्यादा हमिंग शुरू कर देगा, और वो बहुत ज्यादा गोल गोल जैसे स्पिनिंग करना है वो शुरू कर देता है. तो पेरेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैं इसको सुला नहीं पा रहा, ये थकता नहीं है. सो व्हाट टिप डू यू वांट टू गिव टू अ पेरेंट? तो मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को, हम ट्रैक करते हैं पहले. हमको डेटा चाहिए. टू कम टू एन एनालिसिस वी हैव टू टेक 1 week of data. What is the child's schedule for the day? What time does he get up? What time does he have a nap? What time does he actually sleep in the night? Mother might take him at 9 o'clock. But what time finally does he fall asleep? ये पैटर्न देखने के बाद वी कैन ओनली गिव एक टिप नहीं दे सकते किसी बिहेवियर के लिए. बिकॉज एवरी बिहेवियर हैज अ पैटर्न. राइट. ठीक है. तो वी एनालाइज द पैटर्न कि क्या हो रहा है दिन में, क्या गड़बड़ हो रहा है बच्चे. And we tell parents, you cannot force sleeping, you cannot force talking, you cannot force eating beyond a point. Understanding the pattern and then adjusting your inputs accordingly will give you the best result. A mother is taking every day at 9 o'clock to sleep. He sleeps only at 12 o'clock. I said, why you take him at 9? Take him at 11:45, no? ये आइडिया मदर को स्ट्राइक नहीं होता. सोच रही है कि मैं 9 ले जाऊंगी तो सोएगा. मैंने बोला एक हफ्ते से सोया नहीं ना, तो फिर क्यों 9 o'clock जा रहे हो? So the data every day, if I watch and see every day is sleeping at 12 means his sleep time is 12 o'clock. Can you force somebody to sleep? No. If you want him to sleep at 10 o'clock, you have to find out what's going on in the rest of the day. Why is he sleeping at 12? Maybe he's having a 3-hour nap. Correct. So we have to analyze everything and then only we can give a solution. Right. So, when a parent feels that the child needs therapy and is recommended by, say, a pediatrician or a pediatric neurologist, जो भी assessment basic करते हैं, and when they are recommending for ABA therapy, how should a parent select a good ABA therapist? What they should see in that center so that they can make a right choice? Because if they make a right choice, they will expect good outcomes. So I want you to focus and tell us how parents can select a good ABA therapist.
First of all, the person head of the center should have a master's degree in Okay. ABA. वो certificate दे, Okay. ठीक है ना? That certificate is, there are two terminologies now. It's called BCBA or QBA. What is The head of the, BCBA, ma'am? it's the degree that we have got is called Board Certified Behavior Analyst. Okay. उसका हमारा master's degree को, after we finish our master's degree, we have to do an exam with the Board of Behavior Analysts. Okay. They will see our practical training and our theory and do an exam first. Okay. And then you get a degree. You're not just going to master's and finishing your degree. Correct. You have to do the practical training also. Okay, Right. so 1,500 hours, मैंने तो 1,500 hours किया. You Right. also would have done it for LSLS, Yes. right? Yes. Yeah. Yes. So that is, that degree is that. So after that, you must also check whether the therapist is selected. Parents should be involved. ये नहीं कि छोड़ दिया. Try and understand what are your targets for your child. And is that target meaningful? Is that what your child doesn't know? Right. Get involved, because unless you are involved, then you can't give the practice at home, right? Yes. All right. Second is, every therapy center, 3 months you don't see progress, stop. Find another therapist. If somebody says 3 months is not enough to show progress, then she doesn't know her job. Correct. Correct? हमारे सेंटर में 1 महीने में रिजल्ट आता है. Significant changes we can see in 1 month. So those days जब हम बोलते थे पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, देखते रहना, करते रहना, वो गया हुआ जमाना. अभी we can engineer the change. हमको मालूम है what are the ways to make learning happen. Correct. So we know what all to change and make learning happen. If it's not happening, I know why it's not happening. Okay. Okay. So ABA gives you all the variables that are important for learning to happen. And then we know what is not going well. Correct. And then we change our teaching methods accordingly. So for you also as a therapist, parent plays a very important role in this process. So maybe you can, sometimes parents feel कि अब हम ABA therapist के पास आ गए हैं, अब वो ये सब ठीक करके हमें बच्चा हमारा बिल्कुल उस बिहेवियर से बाहर आ जाएगा. So what do you want to tell to parents, that what is their role in this process? There are some parents who are not interested at all. There are some parents who are interested. There are some centers who don't teach parents at all. So that is the problem in India or everywhere of the world also. Therapists are not open to teach our parents. That's what I'm hearing now. Because I have always taught. हमारे ज़माने में we worked with parents all the time. And I have continued that policy. And even when parents come to me, some of them drop out because they said, I don't have the time. Yes. Then I said, okay, then you choose another center. I want parents who have the time, who are willing to work with us. Correct. Right. So we do online therapy now and we are training parents. And the ones who are learning are showing such dramatic changes. Wow. Because they are in control now. Correct. उनको अभी strategy समझ में आ गया. अभी वो practice दे रहे हैं, बच्चा सीख रहा है month after month. Wow. So this can be done online also. So ABA therapy can be done through online services also. Yeah. We are doing something called parent coaching. मतलब parent को coach करते हैं online live with the child. बच्चा हमारे साथ नहीं respond करना है. वो जरूरी नहीं है. Mother and child को training देते हैं कि mother को कैसे बच्चे को सिखाना है. Wow. That is the program I've started offering for the last 6 months. That is the key for even for ABT also. For us, out of 10 principles, 6 principles are based on guiding and coaching parents. Absolutely. Because parent is the key towards the progress. Yes, correct. Absolutely. So before we close down, any tip you want to give to a parent, any message you want to give to a parent, ma'am? I would just say explore ABA, understand it, find the right therapist. Amazing results can happen. Don't accept कि बस इतना ही होगा. Autism में बहुत लोग बोलते हैं बस इतना ही होगा, हम देखभाल करेंगे. But the joy you can get as your child learns is immense. Yes.
Right. So I would say find the right ABA therapist, and your child with autism can be without behavior problems. Behavior problems can be reduced in 2 weeks, within a month. Some behaviors within a week. Wow. Some behaviors within 3 weeks. Chronic behaviors. I had a child who had a head banging issue, and he Hmm. had a big bump on his head when he came, and Oh. he was hardly speaking. So mother ने बोला मैडम कुछ भी बात करना नहीं सिखाओ मैडम, ये हेड बैंगिंग 6 साल से हेड बैंगिंग कर रहा है Hmm. और इतना बड़ा स्वेलिंग हो गया. यू टेल मी हाउ मेनी डेज इट स्टॉप. How many? मैडम 5 days. 5 days, which was happening Yeah, for 6 years. yeah. Why? Because the trigger, what was irritating the child, parents didn't know how to solve that trigger. Because every behavior problem is that there's a child is telling you something. And we have to understand what is he telling us. He's not simply throwing a tantrum. A tantrum is a behavior, means he's telling you communication. It is a communication कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. Hmm. बट तुम ना सुनो ये बच्चे का क्राइंग और तुम करते जाओ जो उसको पसंद नहीं है, तो वो रोएगा तो जरूरी कंटिन्यू रोएगा ना. Yes. तो समझो कि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो फोर्स मत करो. पर ये इंडियन, हमारे इंडियन पेरेंट्स की, वेरे पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स आर द सेम आई थिंक, सोच रहे हैं कि फोर्स करने से सीखेगा, फिर टेंट्रम होगा, फिर सब लोग उसी लूप में फंस गए. Yes. तुम फोर्स करना बंद करो, पैंट्रम गया. फिर Correct. सिखाना सीखना है तो थेरेपिस्ट से सीखो, तुमसे नहीं हो रहा है तो मत सिखाओ. Hmm. Why do you want to trigger a tantrum? Correct. So find a better way to teach, I say. That's what I tell parents. Find a better way to teach. You don't have to force your child to teach. There's no chance. वो टेंट्रम करेगा, नेक्स्ट तुमको मारेगा, अपने आप को मारेगा, और कंफ्यूज और प्रॉब्लमेटिक हो. Hmm. क्योंकि वो बोल रहा है आपको कि मेरे से नहीं हो रहा है और आप करे जा रहे हो. Yes. इफ अ बच्चा कैन टॉक तो आर्ग्यू करेगा हमसे ना, Yes. और बोलेगा, और फिर हम चुप हो जाएंगे ना. हमारे टिपिकल बच्चे बोल देते हैं ना, माँ चुप करो, माँ बहुत हो गया तुम्हारा, बस हमने नहीं सुना, चले जाएंगे. Politely they will have appropriate behavior to disappear from the room. पर ऑटिज्म बच्चों को नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, तो रोएंगे, स्क्रीम करेंगे, बैंग करेंगे, फिर भी पेरेंट्स नहीं समझे तो फिर बेचारा क्या करे. Right. तो दैट्स वेयर आवर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर रियली स्टक, बिकॉज उनसे कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है. टिपिकल कम्युनिकेशन रेगुलर जो हो रहा है, उनका जो कम्युनिकेशन दिखा रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं लोग. Correct. पेरेंट्स भी फंसे हुए हैं कि क्या करें. Ah. So How it's a very nice. complex condition, Hmm. very complex condition, and we hope India will start colleges with which give ABA training, recognize ABA professionals, and see that ABA therapy is available for India because everybody will benefit. Yes. Thank you so much, Radhika ma'am, for enlightening us on this subject, because I think this was really, even I also didn't know so many things which I've come to know today through this podcast. And I hope our parents have got benefit. However, if you still have questions with Radhika ma'am, we'll be happy to take them in the comment section. आप प्लीज लिखिए. हमारी कोशिश यही है कि हम आपको इंडिया के बेस्ट प्रोफेशनल्स के साथ अटैच कर पाएं. आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैम बैंगलोर में बेस्ड हैं, उनके 3 सेंटर्स वहां पर है, और आपके कोई भी सवाल है, शी विल प्रॉम्प्टली हेल्प यू एंड गाइड यू. सो डू राइट टू अस, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू. With that note, thank you so much.